एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आइल्स राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. What exactly is an informal letter? It is a letter which is written to friends, family, or people you know personally. We should have a friendly, casual tone with personal details and emotions. You can use contractions like I am, you are, slang, and idioms freely. इनफॉर्मल लेटर स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करें. नाम लिखें, डियर जॉन, हाय सेरा. ओपनिंग लाइन बनेगी, स्टेट द पर्पस एंड चैट ब्रीफली. हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. Body, write 2-3 paragraphs answering all bullet points clearly. Closing, friendly closing statement like looking forward to hearing from you. Signature, use your first name or nickname. Language and tone. सिंपल लैंग्वेज यूज करें, न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करें, नेचुरल लैंग्वेज यूज करें, पर्सनल टच के साथ में एक्सप्रेशंस फीलिंग्स के, ओपिनियंस के अपने दें. इनफॉर्मल वोकैबुलरी और कनेक्टर्स यूज करें, एनीवे, बाय द वे जैसे. टिप्स टू स्कोर हाई: आंसर ऑल द बुलेट पॉइंट्स fully with personal examples. Keep your tone natural but clear and organized. Use varied sentence structures and vocabulary. Check for your letter for grammar, spellings, and punctuation. एक इनफॉर्मल लेटर का सैंपल देखेंगे और ये है हमारा एक इनफॉर्मल लेटर. अब इसके एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट है हमारा ये वाला. Last month, you had an overseas holiday with some friends where you stayed at their house. They have just sent you some holiday photos. Write a letter to your friends. In your letter, thank them for the holiday and the photos. Explain why you didn't write earlier. Invite them to come and stay with you. तो ये चीजें हमने सारी की सारी इस इनफॉर्मल लेटर में लिखनी हैं. तो देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा. Hi, John and Susan. How are you both? I hope this letter finds you well. Although it's such a short time since we last saw each other, it feels much longer. बड़ा ही एक अच्छा एक्सप्रेशन है बताने के लिए. अब यहां पे हमारा शुरू होता है मेन बुलेट्स पॉइंट को कवर करने का तरीका. Thank you so much, not only for such a memorable holiday, but also for the lovely photos that you sent of our day of our holiday together. It brought it all back to me so vividly. Staying with you and seeing where you live was a real eye-opener for me. Australia is certainly a scenic country with remarkable landscape and wildlife, particularly up in the north where you are. बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी हुई है. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. Sorry, it has taken me so much. Sorry, it has taken me so long to write back and thank you. Almost as soon as we landed back in the UK, my mother. अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूं नेक्स्ट पेज पे. Became sick. Since then, we've been running around looking for her, looking after her, and getting carers sorted out. She seems to be improving now and hopefully will be back to normal soon. Next month, we'll be celebrating our wedding anniversary, and we'd be delighted if you could come over to celebrate it with us. It'll be a chance for you to meet the rest of the family and see a bit of England. Of course, you must stay with us. There's plenty of room, and we'll pick you up at the airport. I really hope you can make it. Take care and write back soon. Warm regards, Sally and Mac. तो ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बन गया इनफॉर्मल लेटर का, जो कि वर्ड लिमिट पूरी मीट करता है. इनफॉर्मल लेटर्स के सारे एक्सप्रेशंस मैंने पीडीएफ फाइल में डाल दिए हैं और ये फाइल इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिलेगी. इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू and wishing you all the best for your examinations. I hope you have learned informal letters properly.